Blur. I didn't burst any pipe. That's good. No pollutions. No, I wanted to. You wanted to. That's bad. How about my guys? क्या हो गया? ये देखो बस ये वांग में थोड़ा सा आसरा मुझे देख के. Not happy to see me. No. Cheer up. Sorry. Very sorry. बाहर अंदर आके मैं करना. Close the door. Listen, I need to know the exact thing that we are stopping. Come quickly, no problem. Come, don't wait. And then we have some very good deal of work to finish. One is that map work. Consumer rights, I think I've already finished with you. No, there are certain batches where I'm winding up, especially. But one lecture I have to give it to you. That's something very important because CBSE makes it a point. Economics we have long finished. Geography, and manufacturing industries खत्म किया मैंने. Transport भी खत्म किया. सब मेरे ही मुंह देखो. At least girls were there. At least last class. What was that class we had? Finish. And after that, what is pending? What is tell me. Except one student, nobody came on that day. She was all alone. Where I'm blaming you alone, Anna? Today I can see all have come, except this fellow who missed. Acha, listen. What was the other one? Minerals done. I'm asking. Minerals. Only के बाद ही manufacturing पे जाएगा. Check in your notebook, guys, whether we have written manufacturing. Manufacturing. Pardon me. What is manufacturing? Just check. The last we have written basic ownership. That is classification of industries. वो ये मैन्युफैक्चरिंग है. हाँ तो उसके आगे बढ़ते हैं ना. इधर आप बोर्ड तो रख करो यार. This is Vijay School. हाँ तो क्लासिफिकेशन होने के बाद है ना. I think I had given meaning, importance. बचा क्या ना? Classification and meaning होने के बाद there is very important part. We will be going with agro and mineral base. Am I correct? Yes. तो उसके पहले anything is there. So you gave it in cooperative sector. Oh, what is that? अच्छा, that is classification. Yes. हाँ. तो उसके बाद है page number. Classification is almost completed. Now directly write agro base. उसमें cotton textile and jute textiles है. You write agro based industries. Right quickly है. उसमें पहला रहेगा cotton textile. And दूसरा रहेगा. Don't write below. Only write cotton textile. Jute textile and sugar. Today we have 2 lectures, na? Second is jute textile. And third is sugar. Now, is there any confusion? What is agro-based and what is mineral-based? Everyone knows? How do you define one line? What is agro-based industries? What is agro-based? Very good, but how do you define exactly? Are those industries whose raw materials directly comes from agriculture? Please write down everyone. Agro-based. एक लाइन में लिखना है. Are those industries whose raw material directly comes from Agriculture. directly. Yes. Be quick, be steady, and be easy.
Now every bench. Wait. How do we define mineral base? Same line spelling name. Tell me, don't write. What is volume number 2 now? Volume number 2. Volume geography, volume 2. Volume 2, volume 2, sir. Okay, read. Volume 2 there. Now, how do you define mineral-based industries? Minerals. Example. ये तो example हो गया. Iron, steel, ठीक है, iron अलग है, steel अलग है. iron and steel. What else? Copper. ओए, Iron, bauxite, aluminum. Aluminium industry. What else? Automobile industries. और cement industry mineral-based है. कौन सा minerals है? Gold is not an industry. हाँ? Petrochemical. सब उधर दिया है. What is petrochemicals? Anybody? किसी ने मुझे बोला सर पेट्रोलियम के साथ केमिकल मिक्स करो. पेट्रोल. केरोसिन. Synthetic rubber. सुना है? Fertilizer, यूरिया, गैस, वैसलीन, etc. अभी हम लोग हाँ सिंपल वे में समझते हैं. अभी this side is all agro based. एक एग्जांपल. This side are all mineral based. तो तुरंत मुझे किसी ने पूछा तू किधर है? मैं तो इंडस्ट्री नहीं. Sir, government. मैं गवर्नमेंट रहता तो फिर मैं इधर क्या काम करता है ना. अभी तक तो भारत माता की जय बोल के गांधी जी को अंदर और ऊपर से लेता है ना. करप्शन को इस दुनिया से मिटाएंगे. अरे वो कितना चला रहा है. करप्शन के लिए मैं बहुत कठोर हूँ. अरे वो 2 पेटी आनंद जल्दी निकल. हाँ जो भी करप्शन कर रहा है उसको मैं जिंदगी का आखिरी दम तक लड़ूंगा. ये पहले मेरा आ गया क्या देख. What does it mean? पॉलिटिशियन बोलता जो है उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट करता है ना. और हमारा स्टूडेंट बहुत कुछ बोलता है बट कुछ नहीं करता. सब लोग को पुलिस में भर्ती होने का पूरा क्वालिफिकेशन है. बोलेंगे तो बहुत कुछ काम बोलेगा कुछ बट करेगा थोड़ा बहुत. एंड ही विल टेक bribe and other things. That is the lawyers. I always believe to become a lawyer only one qualification you need. You need to be a professional liar. That is true. Yes. What is it? अभी जैसे I say you become a full doctor. How? 50 पेशेंट को मारेगा तो हाफ डॉक्टर. सर मेरे तो अभी 49 ही मारा. बन जाएगा. एक एक को मार तो गिनते जा रहा. How to become a teacher? Simple है साहब. कल रात को आपने क्या पढ़ा सुबह उठ के बकबक करने का है ना. फिर स्टूडेंट पूछेगा क्या है. कल ही पढ़ा. What does it mean? तो अपना काम कर मैं अपना काम करता हूँ. अभी वांग में जैसा बच्चा हो तो he is aggressive. अपना क्या काम. इधर सब कुछ हमारा काम. अपना तेरा कुछ नहीं है ना. वांग में अब खुद नहीं करेगा. But he wants to sit in my lecture. सर मेरे बारे में कुछ बोल रहा है कि नहीं. शायद इसके एब्सेंस में पूछेगा. आज सर ने मुझे पूछा नहीं पूछा उसका तो आता हूँ. मतलब we want every student to be learning something. Are you guys learning? Very simple. Yes. What are you learning? Geography. Geography you are learning. In geography what are you learning? Industries. Industries. What you become after 2 years now? I don't know. She is correct. She become an adult. 18. Don't you want to become an industrialist? Look at my question. Don't you want to become an industrialist? Don't you? Entrepreneur? Maybe. आप पैसा लगाओ मैं बिजनेस चलाऊंगा. लॉस होगा तो तू रख ले. प्रॉफिट होगा तो मेरा बनता है. 2%. बस 2%. Yes. She is very happy with 2%. I always मैं समझ गया. I always believe that this chapter will try to enrich your knowledge. तो पिछले 10 साल से कोई enrichment नहीं हुआ. अभी 2 दिन में क्या enrichment? कुछ हो जाएगा रे. ये तो नींद में बैठा है. Enrichment क्या होता है? नहीं सर बूस्ट सुना है, हॉर्लिक्स सुना है. Enrichment नया को है तो मैं मम्मी से बोल के मंगा लेता हूँ सर. मम्मी मुझे पढ़ने के लिए बहुत कुछ कोल्ड ड्रिंक्स में ये मिक्स करती है वो मिक्स करती है. तू मैं नहीं करता. Is there any available कि ये डाल के पीने से आप ऐसा होता तो फिर हम लोग क्यों आपको लेक्चर्स ले रहे हैं ना. अनुभव सर को बोल के सबको एक एक वो ड्रिंक ही दे देगा. ये लो बेटा पी लो. कितना पिया? 60%. वेरी गुड सर. 80%. वेरी गुड सर. So when I teach these two industries, children tell me very simple.
अभी cotton textile, the raw material is cotton. Second industry, what I have written. Jute. What is the raw material? Jute. What is jute, by the way? Jute plant. Jute वाली. You know what is a gunny bag? Yes. You know what is that sutli in Hindi we call it? Yes. Achha, we are close. We are close to firecrackers festival. So that is a sutli bomb. मेरा एक दोस्त को लेके मैं नासिक गया था कुछ भगवान के नाम से वो भाई साहब बोले तो गाड़ी लेके मुझे पिकअप करने गए बोले क्यों रे अरे मेरा बिल्डिंग के बाहर बहुत बॉम्ब फूट रहा है बोले तू बॉर्डर में कब जाके रह रहा है अरे वो बॉम्ब नहीं है ये दूसरा बॉम्ब है तू जिंदा ही रहेगा टेंशन नहीं ले फिर भी बॉम्ब फूट रहा है लुक एट द वर्ड इज यूजिंग बोले झंडू बम में क्या दीपावली है झंडू बम कोई फोड़ता है मेरा बिल्डिंग में क्या फुलझड़ी लगा उधर भी तो अब वो चलेगा तू मरेगा तो चलेगा बट मुझे जिंदा लेके अल्टीमेटली आस्क हिम टू कम आउट बोले कितना बम फटा बोले कितना फटा वो मैं गिना नहीं बहुत टेंशन में मतलब उसका जान जान और हमारा so when I teach you this teachers tell always this agro based is important बच्चा बोलता है after reading Tisco what is Tisco anybody Tata Iron and Steel Company what is Misco Mitra Iron. Mysore Iron and Steel Company what is Kisco मजाक नहीं कर रहा हूँ Karnataka Iron. स्टील कंपनी इसको India Iron and Steel Company. फिर पिस्को Punjab Iron. there is one company called JSW हाँ. जिंदाल जिंदाल स्टील Steel so नाम में डरावना है सर जिंदाल है Sir, what's the full form? JSW Jindal Steel Works then we have an international steel producer number 1 in the world unfortunately he is an Indian so my children are very Unfortunately. unfortunately बोला उसको because he never stays in India he started his business as a cycle repair fellow मतलब he नहीं his परदादा चले दिल्ली from which hometown from Rajasthan but today he is not Europe जितना भी international iron and steel है उसी कंपनी से जाता है Name. and you correct Lakshmi Narayan Mittal he has bought a biggest company than his company called Arcelor तो अभी उसका नाम Arcelor Mittal बोलते हैं हम लोग so if I want to show his property you will definitely feel he can keep 50 Mukesh in his left hand side pocket बट हमको मुकेश दिखता है हाँ सर मुंबई में रहता है सर है ना और उसका बिल्डिंग फिर हम लोग एंटीला पंटीला आई डोंट नो व्हाट ऑल द टीला ये फिर हमको लगता है कि हमारा घर को हम इतना दूर दूर से किस देखते हैं चलेगा सर इसमें क्या ही इज आल्सो एपी आई एम आल्सो मतलब बेटा क्या होता है अब पॉवर्टी लाइन है मुकेश भी है मैं भी है ना हम सेम ग्रुप में सर चाय चलता है आपने भी चाय पिया उसको So when I teach industries, one thing you have to be very clear. First, what is its raw material? What is its requirement? What is its labor? And सबसे बड़ा इंडिया में जो questions पूछता है problems of every industry. What is the meaning of the word problem? Can I say shortcomings, drawbacks, Lack of problem. or lack of name? Problems are industry में that we will be studying. Yes. So I'll be giving minimum notes and maximum explanation. We'll do. So every bench is having this volume. चलो pick up So quickly. what is your point? Same. ये मेरा पुराना है. देखो teachers को लोग नया भी नहीं समझते. What is the page? No, my page is not nice. My page is not. We are on the same page. What is that? We are on a different page. What? 149. The child Life का बोल रहा हूँ यार. ये तो अभी बंद करते पेज खत्म ना. Life खत्म होता है. Yes. 8.8. आप लोग तो हजारों साल जियो मेरा खत्म हो जाएगा. Let's come back to our industry called jute textile ना नहीं sugar cotton textile है. Very important questions we will be marking. Very important discussion we will be taking. Okay. But very important attention नहीं है. तो कैसा लाभ पड़ेगा वो मुझे मालूम नहीं. ठीक है. तो हाँ अभी जो मैडम ने डोज देखेगा I don't want to ask but don't allow any person to at least come on this time and tell you all this. ये तो jute textile ये नहीं. What is that first industry they have given? ये पुराना बुक है ना.
So क्वेश्चन छोड़ दिया क्यों? मैंने आवाज के शुरू किया खत्म कर कौन सा शुरू किया? हाँ चलो, come down to cotton textile. Now I am reading certain lines. I will be giving some extra lines only that you write in the notebook. Underline. मेरा तो नहीं है ना. हमारे में 152 हाँ 152. Underline. Occupies a unique position. Only underline that word, occupies unique position. Second, contributes significantly to industrial production. Only underline the word significantly. textiles Next. What is next? Employment generation. Underline. Only underline employment. Then forex earning. Oh, roughly दिया लोग ने 12% of GDP. Next, underline 5% towards GDP. What is GDP? Anybody? gross domestic product What is the other word for GDP? National income. Same. It is the only industry. हाँ इधर क्वेश्चन आता है open bracket, which is self-reliant and complete. अभी notebook में ये क्वेश्चन डालो. Why is cotton textile? मैं specifically बोल रहा हूँ. Why is cotton textile self-reliant and complete? Is the AC not functioning? क्या मुझे सोने के लिए सारा फैसिलिटी बना के रखे थे. Cotton textile considered to be self-reliant and complete. Why is cotton textile considered to be self-reliant and complete? देखो very simple way में आपको समझाना है. What is self-reliant? Whatever its total requirement, whether it is labor, cotton textile, machines, climate, production, everything is from India. Nothing is from outside. And complete, even the demand, use, production, sale, everything is in India. देखो every time when we see about industry, normally हम लोग export पे ज़्यादा ध्यान देते हैं. Industry का मतलब भी वही है. If you do not know what is Titan watches, Europeans buy the watches which are 1.5 to 3 lakhs of rupees. why And it is made by the great brand called Titan. फिर हम लोग ओमेगा, स्विस मार, ये वो पूछता है क्या किया? हाँ ये ओमेगा, हाँ कसियो और कैसियो whatever. फिर टाइटन थे, आप भी खरीद ये सब टाइटन. Titan is the only brand in the world which produces the slimmest watch. Even अपना 15 सेंटीमीटर का जो स्केल है ना, अगर आप उस स्केल के साथ कंपेयर करेगा उतना ही थिकनेस है वॉच का. सोच ले अंदर उसने मशीन कैसे फिट किया है. There is a demand for now mechanical watches. You know what is mechanical watches? No need of battery throughout its life. Only you just tie it on a wrist, it starts. Even without your wrist also it will keep working. And बहुत बड़ा बड़ा कंपनी रेस में, उसमें टाइटन का भी बहुत डिमांड है. तो टाइटन क्या करता है? नहीं कुछ नहीं. टाइटन क्या करता है? 100% इंडिया, 100% एक्सपोर्ट. तो कुछ वॉचेस, एक मिनट, आर यू अ वॉच मैन्युफैक्चरर? You know what is mechanical watch? Then keep your mouth. You don't know what it is? Then also keep your mouth. I'm just giving an example. हमारा टॉपिक और कुछ है. मैं ये सब आपको इंटरेस्टिंग इसलिए बता रहा हूँ so that you will come back to my topic. So when I say 100% self-reliant and complete, it's only for Indians. No, Titan का एक प्रोडक्शन यूनिट only Europeans के लिए ही बनता है. वो इंडिया में बिकता ही नहीं. क्यों नहीं बिकता है? क्योंकि उतना महंगा वॉच हमने खरीदेगा नहीं. एटलीस्ट टाइटन के नाम से तो नहीं खरीदे. फॉसिल है, पेट्रोल है, डीजल है, वो खरीद लेगा. हाँ पुलिस ही व्हाटएवर आई गो. बट टाइटन है इंडिया का वॉच के लिए कौन 3 लाख देगा? यूरोपियंस को पूछो, दे लव दिस टिटैन. मतलब टिटैन नहीं है वॉच, इट्स टाइटन. कॉड्जी मतलब रिकॉर्ड्स है. ओके वेरी गुड. मतलब बस इसके आगे इंग्लिश मतलब आई बॉट इट फ्रॉम इंडिया. मतलब then we are saying कि ये जो watch है it is not for India, it's mainly for Europe. तो can I say 100% complete and self-reliant? अभी जैसे अभी एयरलाइंस का ऐड आएगा जल्दी. Which airlines?
Air India. India. I don't know. Let's God bless Mr. Ratan Tata. He wants to see this. Already अभी ad वो लोग ने बना दिया है. Very soon you will see Air India becomes the Maharaja of air. मतलब पूरा दुनिया में एयर इंडिया का एयरलाइंस कोई पब्लिक बुक करने का उतना उनका इन्वेस्टमेंट चल रहा है. Imagine you are somewhere in Massachusetts, US, Chicago, so these are Dallas, Texas, but American booking one ticket to Dallas from Air India. Huh? He's not booking that a double A, Virgin Atlantis, है ना? He's not booking that. What is that? Abu Dhabi का कौन सा famous airlines? Emirates. But he's booking Etihad. But he's booking Indian Airlines or Air India. That's a proud thing. Because already if you flew by Vistara, you will forget any other domestic airlines in India. अभी Vistara तो London में flying करता है. Superb. The quality they ensure, you will feel that you are in a perfume factory. हाँ अंदर घुसते वैसे ही होता है. मेरा मम्मी बोली ये धुआं किधर मार रहा है? मैं यार इसको कौन ला? वो धुआं है, मैं बाद में अचरती हूँ. ये धुआं लिए तुम बैठते हो. और सीट इतना क्लीन कैसा है? मतलब कि तुझे तकलीफ है बैठने में. क्योंकि एयर इंडिया में वैसा नहीं रहता था. मतलब सर्विस, the time pickup, the drop. हाँ. And sorry to say, it is again Ratan Tata combining himself with Air India. उतारा रतन टाटा का है. फिर क्या है? It is Singapore Airlines. You should fly once in your life in Singapore Airlines. Forget from India. है ना? हाँ सिंगापुर एयरलाइंस और एयर इंडिया मिलके विस्तारा बना है. तो देखो अभी जो हमारा नवी मुंबई एयरपोर्ट खुलेगा मतलब मार्च 2025 ना इट्स रेडी. अभी आप उसी तरफ से मैं आ रहा हूँ. काम तो ऐसा चल रहा है जरा वो तो टेस्ट हुआ. इट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट अडानी का भी बहुत है और भी 2-3 कंपनी है जिसने पैसा लगाया. And the project will come to an end by 2036. But then एशिया का बिगेस्ट एयरपोर्ट में गिना जाएगा. और लेट मी टेल यू ये नवी मुंबई हाँ पैसा ऐसा ही पंप हो रहा है उधर. एंड लेट मी टेल यू फेब और मार्च का आपका बोर्ड एग्जाम होने के बाद यू कैन बी अ विजिटर दे. जैसे वो फ्लाईओवर से उतरता है यू कैन सी द बिगेस्ट गेट. पुल में भी नहीं उससे पहले आ जाता है बट उसका रनवे तो इतना बड़ा बनाया उन्होंने. एंड इट इज साइट्स इज अमेजिंग. टेकिंग ऑफ एंड लैंडिंग यू कैन सी दैट ब्यूटीफुल माउंटेन लैंडस्केप. अनलेस हमारा अंधेरी और सांता क्रूज पब्लिक डब्बा लेके what is this? Well, Indian, all free. But that is one of the best. And अभी उन लोग ने उसको लैंड वाटर और एयर से कनेक्ट करने का ट्राई किया. People all over the Mumbai, Navi Mumbai, international, they'll all land up here. And वहाँ से अटल सेतु पकड़ेगा तो. Understood what I'm trying to say? So we always I don't know what we want to do it. That's not my topic. But we always believe ये self-reliant होता क्या है? 100% I am complete. I don't want anything coming from out. एक टाइम था कि इंडिया का जो डिफेंस कंपनी था, कंपनी नहीं इंडस्ट्री, was 100% imported. But now we are exporting. 2 days before, 54 BrahMos. You know what is BrahMos? Yes. Has been landed in Philippines. अभी फिलिपाइन बोलेगा चाइना को चल अभी फ्लाइट उड़ा के दिखा क्योंकि वो बार-बार फिलिपाइन का एयर स्पेस में घुसता है. बोलता सॉरी शेर आई केम बाय मिस्टेक. ब्रह्मोस बोलेगा सॉरी वाली कुछ नहीं है तुरंत ऑटोमेटिक फायर हो जाएगा. एंड ब्रह्मोस इज वन ऑफ द आईबीएम या आईएसबीएम का सर. पाकिस्तान को डिटेक्ट भी नहीं कर पाया था जब वो. हाँ वो तो ये लोग ने पर्पसली डाल दिया था और फिर पाकिस्तान बोला सॉरी बाय मिस्टेक गिर गया. अरे गिरने तक तेरा रडार क्या सो रहा था. You didn't catch the. मतलब India wanted to test whether that Pakistan can catch this BrahMos. लोग ने catch नहीं और purposely उसमें लोग ने fire नहीं लगाया था. सिर्फ let it fly and it landed somewhere in Pakistan. इंडिया ने माफी मांगा सॉरी हम लोग तो टेस्ट कर रहा था किधर तेरा मतलब रडार ने तेरा पकड़ा नहीं. And BrahMos is the only missile in the world which flies at a very low height. ये भी एक इंडस्ट्री है. अभी इंडिया उसमें भी सेल्फ रिलायंट बन रहा है उसमें भी कंप्लीट बन रहा है. बट जब फॉरेनर बोलता है कि चाइना मुझे आंख दिखाता है उसका आंख ही कितना दिखा
फिर भी ये लो ब्रह्मोस रख लो है ना. We always believe that India is slowly and steadily becoming what 100% मेक इन इंडिया प्रोग्राम चल रहा है. मेड इन इंडिया से हम लोग मेक इन इंडिया में आए. अगर अभी ब्राजील आके हमको टेक्नोलॉजी दे रहा है और बोलता है कि आप न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाओ. You know what is a nuclear submarine? No need to come above the water. It can be inside the water for years. जो उसका एनर्जी है वो खुद ही प्रोड्यूस करता है. हाँ डेफिनेटली. इंडिया के पास ऑलरेडी 2 है, तो हम लोग ने थोड़ा सा अमेरिका से बिग मांग के रखा, बट अभी हम खुद का बना रहे हैं. So that is also what self-sufficient, and we are becoming reliant. We are totally dependent on Indian scientists and Indian technology. So it's a proud moment for our country that ये जो cotton textile है next to agriculture सबसे ज़्यादा employment देता है. Why? Because maximum work is done by labor, not by machines. Although हम लोग handloom से power looms में आया है, but cotton ball plucking बाकी जो काम है वो man ही करता है, human beings. Although we have machines. Some students, I think my last year students. चलो. So understood what is? तो मैंने इतना बड़ा example only ये 2 word explain करने के लिए दिया है. Shall we proceed? Yes. चलो. Next we can underline it contributes वो सब हो गया. ये देखो self reliance का लोगों ने दिया है. You try to write this answer. If you don't get it, tell me. I'll give it. Now let us go to A, cotton textile. I am reading it. I am explaining it. You are just marking it. Okay. In ancient India, underline produced with hand spinning and handloom weaving. Only that's enough. 18th century, underline. Power looms came in. What is power looms and handloom? The difference क्या है? Handloom is by hand, power looms is by power. It's by machines. Handloom is labor. Okay, chal. Let us go to the second one. Our tradition was up छोड़ दो. The first mill. Did you see? Mumbai in 1854. Textile mill. Next, World Wars was up छोड़ दो. Features. There were underlined. ऐसा याद रखिएगा 1947 independence. How many industries? 1946. Easy है? हाँ. Cotton and human-made fiber. अब वो सब छोड़ दो. 1946 cotton mills. 80% circle the word private sector. Now, who will tell me why 80% is private? Cotton textile. Why only 20% is in public? You know what is private public ना? क्योंकि cotton textile में iron and steel के तरह crores of rupees investment नहीं है. एक टाइम ऐसा था कि morning he used to do farming with the family. Evening जब घर पे आता था घर पे वो handloom चरखा चलता. Are you understanding what I am saying? तो आज भी आप दादर जाओ, परेल जाओ, न्यू परेल या लोअर परेल जाओ, जितना भी इंडस्ट्री है प्राइवेट ही है. आनंदास, मथुरदास, फिनिक्स मिल्स, वो तो अभी मॉल बना दिया लोगों ने, है ना? हाँ, फिनिक्स मिल्स है, फिर कमानी एरिया है कुर्ला में, वो पूरा प्राइवेट ही है. ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट ने नहीं डाला. इनफैक्ट आपको टिस्को का मैं वीडियो दिखाऊंगा ना, रतन टाटा का नागपुर में सबसे बड़ा टेक्सटाइल मिल था उस टाइम पे 1856 में. So he also started a textile mill. Understood? So back. Chalo, let's move. Now let us go to 93% is produced in underline. Decentralized. What is the meaning of the decentralized? Opposite of centralized. You understand that? Private sector लिखो ना. प्राइवेट सेक्टर में जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है. लोकेशन कम डाउन डायरेक्टली वो पैराग्राफ में आ जाओ. महाराष्ट्र पुट स्टामर मार्क मुंबई शोलापुर पुणे एंड वार्धा विल डू. गुजरात अगेन अहमदाबाद वडोदरा एंड सूरत. इनफैक्ट सूरत इज बिगेस्ट. एम आई राइट? देन नेक्स्ट वी हैव यूपी कानपुर मुरादाबाद. वेस्ट बंगाल वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज मुर्शिदाबाद and Hooghly. So Madhya Pradesh, Gwalior and Ujjain. Tamil Nadu very important, recent and very promising. Coimbatore and Madurai. Have you heard about this Coimbatore? No, sir.
It's one of the business town like Mumbai, and it is very hustling bustling city. कोयम्बतूर में कुछ एरिया है जिसका कॉटन टी शर्ट्स आज भी यूएस ही जाता है. It is not sold in India at all because उनका प्रोडक्शन इतना हाई क्वालिटी का रहता है. If you go, you can buy worth rupees 200 to 300 rupees the best quality t-shirt. वो एरिया का नाम भी चलते बोलता हूँ. If you want to see, आप कोयम्बतूर में कभी ट्रेन में जाएंगे ना, that people will come with the t-shirts and other things. 200 rupees, 150 rupees, best cotton textiles. Why? That entire area for this only. और कुछ नहीं बनता. T-shirts और बनियान बनता. You must visit once. If you are a little bit about that, Mr. Jug, what is his name? Isha Founder Group. Isha Foundation सुना है? That is there in Coimbatore only. वो बहुत जंगल के अंदर है. मैं गया है. But Coimbatore is very important for cotton textile. Is it okay? Importance we are marking. Close links with agriculture. उतना underline करो. Provides underline living to farmers. ये bracket में डाल दो. Cotton ball, engaging, those are. Anything activity you don't understand, please ask me. What is गिनिंग वो कॉटन से वो थ्रेड बनता है, फिर यार्न्स बनते हैं, फिर बेल्स बनते हैं, फिर टेक्सटाइल वीविंग होता है, फिर डाइंग होता है. Garment. cotton to the thread? Thread. Shall I? Anyone? Right. Shall I put more effort in putting it into your notebook? ऐसा चलेगा? अभी नेक्स्ट लेक्चर में पूछता हूँ. अगर नहीं चलेगा तो फिर करेंगे. What time is the break? 5, 6:15. 6:20. It's okay. I know. 5:15 to 6:15. Industry by creating underline demands support underline many other industries. अभी कौन सा इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है? केमिकल्स एंड डाइज, मिल स्टोर्स, पैकेजिंग मटेरियल्स एंड इंजीनियरिंग वर्क्स. जहाँ इंजीनियरिंग वर्क्स है ना, उधर लिखो मशीन. पावर लूम का मशीन जिलो की बना. I know when I am not giving notes, you guys don't understand the topic. तो क्या बोलता हूँ, डॉक में इतना सा भी नहीं समझना. Only you sit and chit chat. Which point he was marking? Tell me. तेरा बुक में देखना, उसका मुंह में क्या देखना. कौन सा पॉइंट मैं मार्क कर रहा था? डोंट टेल मी. Stand up. Read that point where I have left. What you read under, huh? Sit down. Cotton yarn, underline, forms an important part of India's export. Only underline उतना ही. कहाँ export करता है? Japan. Then come down. US, UK, Russia, France, bus. Close bracket. देखो Singapore, Sri Lanka, Africa, whichever. 4 popular countries you can remember. ये पूरा questions read कर लो. Spinning, weaving. Problems I will give it in your notebook. Because exam में आता है. Problems. So, another. मैं तो इसे गरम बजाऊं. गरम करेंगे यार. तवा है. गरम के सब. चलो जल्दी रीड कर लो. We will write problems of cotton textile, and I want you to write something. Not you will forget. नहीं. कुछ नहीं दिखाने का. I have promised to myself. more videos too. The live चल रहा वही नहीं समझ में आता. Videos दिख रहा. Briefly explain. Write out question. Briefly explain the main problems of cotton textile industry. Briefly explain main problems of cotton textile industry. Imagine a 60+ old gentleman sitting and doing this. है ना? पहले लड़के सर ये क्या? अरे छे. Main problems of the life. Cotton textile industry इधर है ना? Point number 1. चलो, shall I? देखो, you only think before I give क्या problems रहेगा.
सिंथेटिक फाइबर का कंपटीशन। वेरी गुड, फर्स्ट। अभी कौन सा सिंथेटिक फाइबर है जो कॉटन के साथ डायरेक्ट कंपटीशन में है? नायलॉन, सिल्क, है ना, टेरिलीन। मतलब जो भी कपड़ा बिना आयरन करने का रहता है, हम लोग को मजा आता है वो पहनने में। You know why the jeans was developed, or why, which country? In initial industrial revolution in America, they need to give some uniforms to the workers जो महीना महीना नहीं धोएगा वो, उसके लिए जीन्स फैक्ट्री स्टार्ट की। अभी हमारा बच्चा ऐसा जीन्स पहनता है कि मुझे शर्म आता है वो देखने के लिए। सर क्रॉप्ड जीन्स है सर, ये कौन सा क्रॉप है यार? हाँ भाई, ये तो फिर भी ठीक है, लड़कियां तो फिर इधर से जुड़ रहा है, फिर इधर से ये क्या है? फैशन फैशन। And time and again she will come and sit in front of me. How I am? Next time don't wear it. What does it mean? That jeans was mainly for the workers. अभी ये कौन सा वर्कर है सर, ये ऐसा पहन के? सब वर्कर हो गया। करेक्ट है। अभी फिर वो कौन सा है जो ऐसा पतला सा ये लेडीज पहनते हैं, वो स्लैक्स कुछ है ना? लेगिंग। हाँ, that is mainly for those ladies who are very old and expected mothers के लिए वो दिया जाता है। अभी तो यार हर लोग वही पहनता है। What is this? The fashion. This is good. तो कुछ मटेरियल ऐसा आया है जो एग्जैक्टली कॉटन से ऑपोजिट है। नो आयरनिंग, नो वॉशिंग, नो क्लीनिंग प्रॉपर। सर वेरी गुड सर, मैंने पिछले 6 महीने से जीन्स नहीं धोया, मतलब उसी लिए कोई चूहा मारा हुआ नहीं सर, चूहा मारेगा ना, इससे भी गंदा बदबू नहीं आएगा सर, उससे भी उठता है। शाहरुख है ना, he says I have not washed my jeans for last 6 months। अरे पैसे किस लिए? हाँ फिर क्या, अरे पैसे किस लिए कमाता है? He has bought an island in Abu Dhabi। के पास हाँ जीन्स धोने के लिए पैसा नहीं है। तो इधर मैं चाहे तो लॉन्ड्री में फ्री में धो के देता हूँ, उधर मिल है ना। सर ये वोंट बी एबल टू अफोर्ड द वाटर। क्रूजी फेलो सर। अबे देखो, व्हाट इज दैट वन फेलो फ्रॉम दैट जेल हैज कम आउट, आई डू नॉट नो। हां बट फालतू में मिस्टर सल्लू का नाम उसके साथ जोड़ रहा है, धमकी मिल रहा है, फायरिंग हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट इसका हो रहा है या उसका हो रहा है। बट हमारा टीवी न्यूज़ चैनल 24/7 चालू रहता है। हां डोंट टेक द नीड। अबे लॉरेंस विश्व मतलब अभी सल्लू का नाम है और कहीं तो नहीं, इसके साथ मिलके फेमस हो। धमकी मिल रहा है, अरे कौन सा धमकी है ना। तो आई ऑलवेज बिलीव अभी हमारा जो कॉटन टेक्सटाइल है, पहला प्रॉब्लम तो व्हाट्स सिंथेटिक। सेकंड प्रॉब्लम क्या है? 90% आर नाउ इन बॉयज, 90% आर इन पावर लूम्स, बट हमारा पावर गायब ही रहता है 90% ऑफ द टाइम। सर क्या है? लूम्स है सर, पावर तो है नहीं। कब चला? 2 दिन कहीं, अभी आएगा तो चलेगा सर। बोले क्या बिजली? वो कौन है? अरे इलेक्ट्रिसिटी है सर, महाराष्ट्र में है। रेगुलर पावर सप्लाई इज नॉट देयर, इरराटिक। यू नो व्हाट इज इरराटिक? अभी आएगा। Irregular, then what is the use of turning my big industry into a power loop? As he said, labor shortage, change in fashion and trends. अगर तू जीन्स 6 महीने पहनेगा, कौन कॉटन क्लॉथ खरीदेगा? You are wearing a cloth which is called a satin, touching the skin, very silky and all that. फिर cotton खत्म से। Yesterday I was watching one of my favorite, I think some of you friends know what's her favorite, Titanic, where that boy and the girl die. तो उसमें फिजिक्स इसने एक्सप्लेन किया, the surface area of the cardboard is 1% can be easily adjusted, but then cardboard या board जो भी था, but लड़की जिंदा हो गई और लड़के को मार दिया। अभी लव स्टोरी में भी फिजिक्स घुसा है तुम्हें। हाँ सर, वो बोर्ड का नाम लोगों ने मेजर किया सर। तुझे तो क्या बोलते हैं? What does it mean? The popularity of the movie is not that. The popularity of the movie is the ship. It was considered to be the unsinkable ship, unsinkable. It was also a true But she did not complete the first journey only. पहली जर्नी में वो बीच में डूब गई। आपका और मेरा घमंड क्या है? मैं है मैं। दूसरा मैं है मैं। फिर हम मैं का तो निकल गए। So we always believe a sugar cotton textile was considered to be the biggest. But अभी किधर है? How many of you and me wear cotton? No. But slowly and steadily, government of India is trying to revamp this industry. Revamp मतलब फिर से नंबर 1 बनाए इसको। क्यों?
because it is the only industry which is 100% self-reliant and complete. समझ में आ रहा है? अभी मैंने problems को explain किया. चलो, right? Point number 1. Problems of cotton textile, na? Right. Use of old and outdated machinery. Use of old and outdated machinery. Second one. Irregular and erratic, ERR, है volume में है, power supply. Irregular and erratic power supply. Next. Stiff foreign competition. Especially import of foreign fabrics. Next, low labor productivity. Low labor productivity. अभी भी cotton textile में अमेरिका नंबर 1 है, इंडिया में कहीं भी नहीं. Foreign. Low labor productivity. India is in the 3rd and 4th. बांग्लादेश आ गया, श्रीलंका आ गया. Low labor. ये बीच में बहुत जरूरी तो टिप्स उसको दे रहे हैं. नहीं गुजरात तो वो है नहीं चाहिए. हाँ ये ठीक. Low labor productivity. Next. Units are small and fragmented. You know what is fragmented? टूटा हुआ है. एक ही लोकेशन में कम से कम 100 फैक्ट्री लगा है, बट सब छोटे छोटे है. Small and fragmented units. Next. Change in fashion and trend. Change in fashion and trends. That's all. Ask me if you have any queries. अब ये काम करो खुद दे. What is this statement? Units are small and fragmented. मतलब याद है मैंने बोला डिसेंट्रलाइज सेक्टर में है और ऐसा 100 मिलके ना एक लार्ज स्केल बन सकता है, बट नहीं मिलेंगे, छोटा छोटा है तो प्रोडक्शन बहुत कम होता है. एंड स्कैटर्ड का मतलब क्या है, एक जगह पर नहीं है. सो ऑल कम्पीट फॉर रॉ मटेरियल्स. दैट विल रिड्यूस इट्स टोटल. ओए जूट टेक्सटाइल लिखो, तुरंत ब्रेक में इसका. हाँ क्या लिखा है, अभी तो मुंह से बात कर रहा था. जूट टेक्सटाइल्स लिखो. Write the factors responsible for jute mills in Hooghly River. लिखा वो? चलो लिखो. I will show you this video. Right now. अच्छा ठीक. तो फिर लिख लो. There is a page number. I can't say it. Factors responsible for jute mills. ये क्वेश्चन आता ही आता है. Along the Hooghly River. Directly लिखो. Inexpensive water transport. What's the question? Factors responsible for factors responsible for jute textile along the Hooghly River. Hey, where is this river Hooghly? West Bengal. So India में सबसे ज़्यादा production West Bengal ही है. Everyone has to write. Is he looking left and right? टी-शर्ट में वर्दी लिखा है बट वर्दीनेस तो कुछ जीरो है. दूसरे के लिए लिखा है आपने लिए. हाँ तो वर्दीनेस दिखा जरा. You came for my lecture. I'm very happy. You missed the lecture. Why? So what is your? अच्छा हाँ क्या you know boys and girls in between the lectures. So madam was teaching. Okay, that is you and your dearest madam. I will not. चलो, अरे लिखो. He thinks I'm playing the show. Where is the page? I'm like मैं आने का काम है. ये थोड़ा है. इधर आना नंदी. अबे मोटे नहीं लाना.
हमारे एरिया में पॉलिटिशियन अरे तू इधर आ मैं नहीं मारूंगा लगा ही था प्रॉब्लम्स क्या है झूठ टेक्सटाइल डालो उंगली इधर क्यों आ रहा है तुझे तो इधर आ जब मैं पढ़ा कमी है ना इतना प्यार से मैंने अपने बच्चे को भी नहीं बुलाया पढ़ाया बच्चा हमने अच्छा अरे नहीं हाँ यार राहुल गांधी छुपा के रख सकते तो मैं let us see why is notebook now wait I'm coming from there right first point है तो मैंने ऐसा कहाँ से लिखा है कहाँ से पागल है क्या उसके आगे एच भी लगता है फैशन थोड़ी है रुक जा तो बड़ी सर कहाँ से लिखना है कहाँ से क्या टेक्स्ट बुक से लिखना है कहाँ नहीं है सही तो टेल द पेज क्या है 155 हाउ कम दीस गर्ल्स आर फाइंड आउट सो ये नॉट 155 सर इसका इसका देखो सर इसका नहीं देगा वो बच्चा नहीं लिख मत अरे लिख मत दे नहीं दे रहा लड़का पेन दे So you're not ये मेरा फ्रेंड है तेरा फ्रेंड अरे दे अरे पेन ही ले लिया तेरा फ्रेंड है तो दे पता है अभी स्कूल में देख हाँ देख ला क्यों तो होम टाउन अच्छा अरे बोलो ये कर मुझे भी मालूम बट कैसा वे लोनावाला Did you cover up all the subjects whatever you missed? Yes. Sure. You can mix for what I'll correct you. सर Raise yours. सर इधर रुकना भाई पहले इधर रुकने दे। अरे लिख नहीं महिला मुक्ति मंडल का भी कर रही है। अरे पेन तो अभी इनको पेन ले लिया किससे लिखो वो मुझे नहीं मालूम है तो पेन देगा एक एक कर अंदर का खरीद देगा मेरा पेन ले रहा है व्हाट इज दैट अंदर इधर और मैं कैंप में करते थे बच्चों को सुबह उठ के टावल में आधा ही नहीं पूरा दिन भर टावल में ही था सर वो ना सर चुरा लिया इसने चुराया मालूम नहीं और बस में भी बेचारा ऐसे ही आया कौन था सर माने स्टूडेंट्स हो और सर मैं लिख रहा था वेयर इज इट शो मी द फुल टेक्सटाइल इतना झूठ क्यों बोल रहे हो टेक्सटाइल कि देखो ये जो मेरा नोट्स ही है ना हां अरे आप की कर इधर रीड द क्वेश्चंस briefly explain the main problems और प्रॉब्लम तो तेरा राइटिंग नहीं है और तू प्रॉब्लम्स ब्रीफली एक्सप्लेन करेगा ओए ये बैक टू दिस पेन उसे पेन ही नहीं लाया हां तो जिससे भी लिया तो दे उसको डोंट प्ले विद स्टडीज वो तेरे जैसा नहीं है Hey guys, listen. मेरा plan है कि this one I'll finish. We have 2 hours of map marking. I think something we have done map marking, but when all were you guys were absent, that is your problem. But I will do it for the whole class, and then that consumer rights है ना, consumer rights वो आके एक lecture है. So maybe one more day I will pull you on, then I will finish my course. तो मंडे दिन lecture है ये मंडे क्यों रे? कभी पे मतलब सचमुच है क्या कमिंग मंडे हाँ तो मेरा ही रहेगा ना मेरा लेक्चर ए माय लेक्चर जो है ना रुको देखता हूं रुको देखता देख ले ए गाइस अभी मैंने जेल में भी ऐसे फिनिश तो दे गिव 3 lectures in one slot